Hello guys, welcome back in my channel. Here we are going to start sum number 1 from dissolution chapter. These are the columns what we need to prepare. Here I am having this question. This is first question from government textbook from dissolution chapter. In dissolution chapter you have to prepare realization account. Realization account means assets are realized. Okay, that is the meaning of realization account. And then we are having partners capital account, and finally we will be having cash or bank account. Here we are not having balance sheet because the firm is going to be dissolved. The firm is not going to continue for the next year. That's why we are not having balance sheet. In previous lessons, if your balance sheet is tallied, that means sum is correct. But in dissolution chapter, if your cash and bank account is tallied, that means your sum is correct. So let's begin. Here I would request you to use headphone for good result. Okay, I'll start this sum. Ganesh and Karthik are partners, sharing profits and losses equally. They decided to dissolve the firm on 31st March 2018. Their balance sheet was as under. So this is the date of balance sheet, and this is the balance sheet. Students, you have to keep this balance sheet empty. That means you have to transfer the items of balance sheet, right? Where to transfer? आपको बैलेंस शीट का आइटम्स ट्रांसफर करने हैं रियलाइजेशन अकाउंट में. लायबिलिटी शोस क्रेडिट बैलेंस, तो लायबिलिटी साइड के आइटम आप ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में, और एसेट शो करता है डेबिट बैलेंस, इसलिए एसेट्स के आइटम आप ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में. दीज आर दी एडजस्टमेंट्स. सो I'll start. Columns I have made ready, even the name of partner is written over here. Okay, columns are ready with the names of partner, and here I am having debit and credit balance. Here also I am having debit and credit balance. Sorry, debit and credit side. Here also we should have debit side and credit side. So see, creditors, bills payable. Reserve fund is distributed among partners. This capital account will be transferred to partners capital account. So ये जो liabilities है ना, that will transfer to the credit side of revaluation account. Okay, how can we do it? Let's see. Here you will write by sundry liabilities. Okay, इसको head बनाना है sundry liabilities को, and below that we will be writing, we are having creditors and bills payable. So we will be writing creditors and here bills payable. Creditor is 18,400, 5,600. 18,400 and 5,600. Total is 24,000 will be taken in outer column as I have shown here. Then next we are having reserve fund is distributed among partners in their ratio. What is the ratio over here? Equally. So this reserve fund will be distributed among partners equally. This is partners capital account. We have to leave first line to record balance brought down, and here I'll write reserve fund. It is distributed in their ratio. Ratio is equally, so 10,000 and
10,000. Students, I tell you this dissolution chapter is very simple. सबसे ज्यादा सिंपल ये dissolution chapter है. ठीक. Okay, these three items are done now. Capital account Ganesh and Karthik 40,000, 80,000. So I'll write here by balance brought down. I'll write here 80,000 and here I'll write 40,000. Let's check 80,000, 40,000, 40,000, 80,000 it is. $40,000 and this is 80,000. Chalo, done. Next, liability side is over. Now asset side. Asset में देखो आपको सारे assets you have to transfer to the debit side of realization account. How many assets? All assets, current assets, fixed assets, except cash, because we have opened separate account for cash. Except cash, all these items are to be transferred to realization account. So I'll take these items to realization account like this. Here I'll write to sundry assets. Okay, I'll make this head $88,000, $12,000, $32,000. 88,000, 12,000, 32,000, 24,000, 4,000, 24,000, 4,000, and the total of this is to be taken in outer column. Total is 1,60,000 will be taken in outer column like this, right? Now cash 4,000. I'll come here. I'll write here to balance brought down. Here won't be this thing. Here will be amount. To balance brought down 4,000. Okay, now come to the adjustments. Here it is saying assets were realized as under. That means these assets are realized. मतलब ये सब assets को sell किए हैं. तो क्या क्या sell किए? Building rupees 82,000 will take. अच्छा, ये सब assets sell हुए हैं मतलब business में cash आया है, right? बिजनेस में कैश आया तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट. तो सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट में एंट्री डालते हैं. ओके, बिल्डिंग 82,000. तो कैसे लिखेंगे? सी, यहाँ पे आपको लिखना है बाय कैश अकाउंट. मेक इट हेड and below that you have to write building. How much will be amount of building? Alright, first building and the amount is 82,000. I'll write here 82,000. Next item, debtors 22,000. Debtors 22,000.
stock 20,000, stock 20,000, then bills receivable 3,000, bills receivable 3,200. Okay, total is, see then after we are having Ganesh agreed to take over. Okay, तो ये तो गणेश लेकर गया है, तो जितना हमारे पास कैश आया पहले उतने का एंट्री कर दो. Total of this is 1,27,200. I'll write here 1,27,200. Now this much cash is received. So कैश अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट. हाउ मच? 1,27,200. Right? Next. Now next is Ganesh agreed to take over furniture for rupees 10,000. Ganesh agreed to take over furniture for rupees 10,000. Okay. Now Ganesh has taken over furniture. Let's see adjustment. We'll go to Ganesh account debit side because he has taken furniture, and we'll write here to realization account. डेबिट में इसलिए आएगा क्योंकि गणेश ने टेक ओवर किया, गणेश ने रिसीव किया, इसलिए गणेश अकाउंट का डेबिट में आएगा और अमाउंट है 10,000. ओनली गणेश के कॉलम में आएगा, कार्तिक के कॉलम में आएगा डैश. ओके, अभी इसका सेकेंड इफेक्ट है ना, रियलाइजेशन का डेबिट में जाएगा. सी दिस इज द वे, सॉरी डेबिट में नहीं क्रेडिट में जाएगा, बिकॉज यहाँ पर ये डेबिट है ना, तो रियलाइजेशन का क्रेडिट में जाएगा. विल राइट बाय गणेश, गणेश कैपिटल अकाउंट. विल राइट हियर दिस थिंग and here furniture taken over. Okay, ठीक है. next है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड रुपीज 2,000. तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी पे किया है. अब जब पेमेंट के सवाल आती है तो हम लोग को चेक करना रहता है कि और भी पेमेंट किए हैं क्या लायबिलिटी के. देखो क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं किया है, बिल्स पेबल का पेमेंट नहीं किया है, तो हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का भी पेमेंट करेंगे 2,000 ये वाला, और ये दो पेमेंट भी करेंगे. राइट, सो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज 2,000. ये दोनों आएगा कैश का क्रेडिट में आएगा और रिवोल्यूशन का डेबिट में आएगा. तो मैं पहले रिवोल्यूशन के डेबिट में एंट्री पास करता हूँ. यहाँ पे लिखता हूँ मैं कैश और बैंक अकाउंट. राइट, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिटर्स 18,400, बिल्स पेबल 5,600, realization expenses 2,000. Whatever is the total, we'll write that in outer column. Total is 26,000. Will be written in outer column in this way, the way I have written. Second effect, इसका second effect will go to credit side of cash or bank account. Here I'll write by realization
account. In outer column we'll write 26,000. Two effects are done. Okay, now everything is over. Everything is over now. We'll close the realization account first. This side total is 1,86,000. 1,86,000. And this side total is 1,61,200. 1,61,200. So which side higher? This side is higher. Debit side is higher. And that amount will be written on both the side in this way. The way I have written 1,86,000. Now higher amount minus lower amount कैसे करेंगे? देखो 1,86,000 is the higher amount. 1,86,000. अब इसमें से माइनस करेंगे क्रेडिट का टोटल. क्रेडिट का टोटल है 1,61,200. मैंने नीचे लिखा हुआ है 1,61,200. In that way we get 24,800. तो अब हम लोग पार्टनर का नाम लिखेंगे. डिवाइड करना है कार्तिक गणेश टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. रेशियो इक्वली है तो आ जाएगा 12,400 12,400, राइट. एंड टोटल ऑफ दिस शुड बी 24,800. नाउ second effect of this two will go to credit side of partners capital account and here we'll write by realization account. क्यों realization account लिखेंगे? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी रियलाइजेशन का ही आइटम ट्रांसफर कर रहे हैं ना, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट. और क्योंकि हाँ देखो एक हमने मिस्टेक इसमें किया है, यहाँ पर ये क्रेडिट साइड में है ना ऑलरेडी, तो इसे हम लोग वापस से क्रेडिट साइड में नहीं लिखेंगे. ये ऑलरेडी क्रेडिट साइड में है तो इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग यहाँ पे देंगे डेबिट में. यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट गणेश कॉलम में 12,400 और इसके भी कॉलम में 12,400. ओके चलो ये हो गया. अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे. इसको डिलीट कर दो यहां से. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे. उसमें देखना है दोनों साइड का बैलेंस. क्रेडिट साइड इज हायर, दिस साइड इज 90,000 and this side is 50,000. These both the amount will be written on debit side also. In this way it will be written. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 50,000 माइनस हमको क्या करना है 10,000 माइनस करना है और माइनस 12,400 ये दोनों माइनस करना है. ओके 10,000 12,400 we get 27,600 और यहाँ पे 90,000 minus 12,400 we get 77,600. अब ये जो बैलेंस है हमको डालना है कैश अकाउंट में, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट. और यही चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. कैसे लिखेंगे इसको बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग ये दोनों ही पार्टनर का नाम ले लेंगे यहाँ पे. एंड दिस बैलेंस विल कम ओवर हियर. इसका and total of this will go to outer column 1,05,200.
in this way. Now we'll make the total of both the side. It should be tallied 1,31,200. I'll write here 1,31,200, and this side total is also 1,31,200. In this way, student, this sum is done. And once again I am telling you students, this is very easy. यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फाइनल सेटलमेंट इज डन. हाँ, okay. So I hope you must have understood this video. Thank you very much.